Hello students, this video is for grade 2nd. Let us start. So, this sheet is divided into 3 equal parts in which we will get to know about 3 different subjects which are English, Maths and EVS. So, let us start with our first subject which is of Maths. In this, we have to write skip counting by 5. Skip counting by 5 as we have done before. Skip counting by 2, skip counting by 3 and as it is we have to do skip counting by 5. जैसे हमने पहले skip counting by 2, 3 किया है उसी तरीके से skip counting by 5 हमें करना है. इसमें क्या करेंगे हम 5 नंबर्स को स्किप करेंगे और 6 नंबर को यहाँ राइट करेंगे. लाइक 3 गिवन है, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 इतना स्किप करेंगे. उसके बाद लिखेंगे 9. 3 के बाद हम राइट करेंगे 9. आफ्टर दैट अगेन we will skip 5, 10, 11, 12, 13, 14. Now we will write 15. What we will write? 15. Again we will skip 5 and then we will write 21. Understood? In this way we have to skip 5, 5 and write the 6. 5 नंबर को छोड़कर 6 नंबर को हमें यहाँ पे राइट करना है. ओके, 5 नंबर को स्किप करना है और छठे नंबर को यहाँ पे राइट कर देना है. सो आवर स्किप काउंटिंग विल बी कंप्लीटेड. ओके, लेट अस रिवाइज काउंटिंग 1 to 50. स्पीक विद मी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50. Now let us go to our next section, which is of English.
Underline the adjectives in each sentence. You can see so many sentences are here. यहाँ पे बहुत सारे sentences हैं, इनमें से adjectives को underline करना है. We have a red car. हमारे पास एक लाल गाड़ी है. गाड़ी की विशेषता क्या है कि वो लाल है. So the word red is adjective. यहाँ पे जो word है red, R-E-D, red, ये क्या है? Describing word है, adjective है. So we will underline it. Now the next question. I like watching funny movies. मुझे मजाकिया मूवीज देखना पसंद है. तो यहाँ क्या है? फनी क्या है? ये भी एडजेक्टिव है. ये किसको डिफाइन कर रहा है? मूवी को डिफाइन कर रहा है कि मूवी फनी है. दैट इज व्हाट इज ऑल्सो एडजेक्टिव. हैव अ ग्रेट डे. आपका दिन शुभ हो. तो ये क्या है? ग्रेट. यहाँ पे जो वर्ड है ग्रेट, GREAT, ग्रेट, ये क्या है? ये इसमें आपको क्या करना है? इन दिस यू विल अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स. ओके. शी इज वेयरिंग अ पिंक ड्रेस. शी इज वेयरिंग अ पिंक ड्रेस. उसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी है. सो यहाँ पे क्या है? जो ड्रेस है उसकी विशेषता बताई जा रही है, उसकी डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो पिंक है. सो जब जो पिंक है वो यहाँ पे एडजेक्टिव है. इट इज एन एडजेक्टिव हियर. Those are my new shoes. ये मेरे पुराने जूते, ये मेरे नए जूते हैं. तो यहाँ पे क्या शूज की विशेषता है कि वो नए हैं. NEW. That is why they are adjectives. So we will underline those words which are adjective. हर सेंटेंस में जो भी वर्ड एडजेक्टिव दिखे आपको, उस वर्ड को अंडरलाइन करना है. अंडरस्टूड? या. नाउ see the last section. Last question. Fill in the blanks. In this we will make the fill in the blanks. Dash house is made up of canvas cloth. What kind of house is made up of canvas cloth? Tent house. Dash are houses on a boat. That is boat house. Houses in semicircular in shape. Igloo. Dash type of house moves from one place to another. Caravan. So in this way we have to fill the blanks. I hope you all have understood this sheet very well. If you still have any kind of doubt related to any question, any topic, any subject, you can ask me. Thank you everyone.